Very good afternoon to you. Welcome to Game on Hay. This is a big day. We've got to the business end of this World T20. All those group matches are done. We're down to the semi-finals. As ever, traditionally, we have two semi-finals. The first is today between England and New Zealand. And obviously, in the studio, there is huge excitement. And I'll tell you why in a moment. So it's time to say hello to our panel yet again, to Azhar Mahmood, to Rashid Latif, to Umar Gul, Sana Mir, Aaqib Javed, Savib Richards, all of whom are absolutely on tenterhooks to see what happens next. So, Sana, just refresh us. It's not Scotland and Namibia, it's not Pakistan, it's not Afghanistan, it's not... Who is it today? It's England versus New Zealand in the semi-finals. Finally, we have reached to the semi-finals. And we have got some predictions also. But this is the match we are talking about, England versus New Zealand. Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi se ye live dekha jayega 7 baje, Pakistan time. And we have got some predictions. Yeah, so shall we directly jump on to I just want to start with this. I want to make sure, I want to see who's on which side again, because we did this the other night. We asked people who they felt, for genuine reasons, for good cricketing reasons, might or might not come through this semi-final. So shall I take Umar's prediction first, because he was not present. So Umar, सबसे पहले आप बताएं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से आप क्या समझते हैं, कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा? आज मैंने काफ़ी वर्कआउट किया है और जो मैंने स्टेट देखे तो पहले तो मैं इंग्लैंड के साथ जा रहा था, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ न्यूजीलैंड के साथ. Another one goes to New Zealand. और उसके स्टैट्स में जो डिफाइनिंग फैक्टर था क्यों आप गए हैं वो जरूर बता दें, ताकि हम ये जो अकलौते दो लोग हैं हमारे इंग्लैंड को सपोर्ट करते हुए. अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना बैटिंग साइड में, नो डाउट उनकी बैटिंग इंग्लैंड की काफ़ी लंबी है, लेकिन अगर आप ऑन द पेपर देखें जो रन्स रेशो है ना, उनमें सब ने किए थोड़े थोड़े से रन्स, लेकिन जो कंसिस्टेंट है और जो रेगुलर स्कोरिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, तो इनके ये 4-5 जो प्लेयर्स हैं ना वो रेगुलर कर रहे हैं. उनकी अगर आप फिर डॉट भी देखें ना, डॉट रेशो, तो वो इंग्लैंड से कम है, 35, 43, 38, 34, 32, 29. अगर आप फिर इंग्लैंड की देखें तो उनकी काफ़ी हाई है, 40 प्लस ज़्यादा है, 40, 42, 42, 40, 38, 36. उमर भाई, आपकी इजाज़त हो तो आपका पेपर मैं दिखा दूँ. Let me tell you, ये कहते हैं ना सोबत का असर होता है. ये राशिद लतीफ़ के साथ बैठे हैं, अब इनका पेपर देखें कितना भर चुका है. ये राशिद लतीफ़ की सोबत का असर है. पेपर अटक किया ना आज. मैंने आधा आप पे छोड़ा है. आप सुनने के लिए कंपनी मैचेस. नहीं, बहुत impressive है. He's been sitting with Rashid Latif and now the paper is being filled up completely. He's got already a scorecard. नहीं, बहुत impressive है. But अगर sorry, it's New Zealand. अभी खत्म नहीं हुआ है. खत्म नहीं हुआ. दूसरा साइड अगर बॉलिंग साइड पे आ जाए ना, तो फिर अगर स्ट्राइक रेट की बात करें और इकोनॉमी की बात करें, तो स्ट्राइक रेट पे इंग्लैंड की टीम बेहतर है, लेकिन इकोनॉमी उनकी हाई है. वो उनकी है 36.3 ओवरऑल सबकी, पूरे टीम के बॉलिंग साइड. और न्यूजीलैंड की अगर आप देखें तो 32.1. So the bowling economy for New Zealand is much better. The strike rate is better for England, but the economy is better for New Zealand. And in the batting also, the dot ball percentage is much better for New Zealand. I just got a cross question. Okay. माइंड में था जो आप करेंगे. Dot ball ratio, he's talking about dot ball ratio. What about boundary ratio? Okay, He's got the whole. what about opposition? 70%. Namibia I and agree with Scotland. you. बाउंड्री So उनकी they जो ना played रेशो वो Bangladesh ज़्यादा also. है, इसलिए मैंने रखा था जवाब आपके लिए. मेरे जहन में था. That you have been looking down upon. There are two shows going on here, 3 shows. 55. Excuse me. Okay, let's start. You talk now. We'll have a chat, okay? और पाकिस्तान और उसमें से तो पाकिस्तान ही है ना. Of course, Pakistan, और okay. So I've got the official results for the panelists. उनके स्टेट में मैं नहीं जाऊँगा. So I've Okay, got come the official result for the panelists. For Rashid Latif, between England and New Zealand, it's New Zealand and Pakistan. For Azhar Mahmood, it's England because of that red passport. And logic as well, not just the word passport. And Pakistan for the green passport. Yes. And logic. For me, it's New Zealand and Pakistan. For Sir Vivian Richards, it's New Zealand and Pakistan. Gut feeling, just a gut feeling. Gut feeling. My professional stance tells me otherwise, but just my gut feeling. Okay. And for Aaqib Javed, it's also England and Pakistan.
Sensible. Not passport, some other reason. No. I mean, look, their performance, past performance. This is what we're talking about, past. And all these analysis, their progress throughout the year, it counts only in the group matches. A stronger team doing good, they will win more matches and reach to the semi-final. When it's come to the semi-finals, history gone. And some injuries come in. There is no analysis will work out today. Okay? I support you there. I have just worked out so far the progress within the tournament. What we have seen is spinners are staying like 6 and over, lesser than that. So both have 2 spinners. Okay, this is my thought. New Zealand bowling can hold to England under 150 because of their what they've been doing. Sodhi and Santner staying under 6, so like 26. So Saudi is doing good. So 30 runs, bowled 30 runs. Mill, little bit expensive, 36. It's become 148. If you compare with England bowling, so Mark Wood is expensive, 40. Azhar Rashid is really good, 26. Chris Jordan 30. Chris Walk little bit higher side, 35, and then Moeen Ali 30. So it's 161. So if you go by their bowling options, I think New Zealand has edge and they have shown it. But today, this is what they've been doing. But today, the history will made another mark. That's why I changed my mind. But Aaqib, you predicted England. I did. He's still Okay, going with you- it. Because you have to go with England now. these numbers are history. Okay. But today, because they are very confident because they've been doing good, they have the batting spark more than New Zealand. They have more match winners in batting than New Zealand. New Zealand is a steady team. So today doesn't have anything to do with it. The difference in terms of getting out of the qualifying groups, and today it's a knockout. Knockout. So anyone, 2 wickets Yeah. and the pressure on you. And I think today task will be crucial as well. Toss, Because- yeah. Well, we'll analyse what's been happening in Abu Dhabi shortly. But I just want to ask Viv. You know, this yeah, so Viv, this feeling you have round about here somewhere, yeah, the gut feeling. the gut feeling. Do you have a gut feeling as to who, for instance, in that New Zealand team will win the game for New Zealand? No, Is there someone? I think they are a team that plays together well, and I think it's going to be little bits and pieces here that gets it done. So no, then. No, it's you can't look at that. I don't think New Zealand do have a potential match winner in a sense. They are a together team. Yeah. They're a team that focus well on how well they work as a team. So I'm Okay. backing them to Well, that's okay. fair. to come through as a team. You may have your butlers and all this sort of stuff. We do have a butler. I do have a butler, but that's another story. When we have a butler, which Yes, we have a battle. we have a butler, who is the sort of man that could make an enormous difference to a day like this, if it's his day. Anyway, have a chat with the left wing, see what they... So yeah, so I just, for the record, David said England and Pakistan and Umar with New Zealand and Pakistan. So we've got the results, predictions here. जी राशिद भाई, अब आज की क्या prediction है? आज की क्या खबर है आपकी तरफ से? मिली जुली है। अच्छा। इंग्लैंड स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये जो मैच हारे हैं फाइनल, मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, 19 का फाइनल, वो माइंड में होगा जरूर विलियमसन के। और कप्तानी का पता चलता है सेकंड इनिंग में, जिस तरह कप्तानी ने कैप्टन ने मैच हारा था वर्ल्ड कप फाइनल, सेकंड फील्डिंग थी न्यूजीलैंड की, तो बस सेकंड फील्डिंग नहीं आनी चाहिए न्यूजीलैंड की, ये टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है आज। अच्छा, न्यूजीलैंड कभी जीता वर्ल्ड कप? Have they ever won any चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। That's different. Pakistan beat England, India before. New Zealand Before this World Cup, in Champions World, never in the World Cup, and New Zealand never won a World Cup. Both the teams in women. And this is a history with every team. South African again, crunch done.
New Zealand हो सकता है ये टाइम है always do क्योंकि well. पाकिस्तान भी इंडिया से कभी भी नहीं जीता था वर्ल्ड कप में. लड़के राशिद भाई सही बात करना, लड़के नहीं जीते थे, पाकिस्तान की पाकिस्तान की बात लड़कियां है। जीती थी. लड़की की बात नहीं, तो पाकिस्तान की लड़कियों की टीम तो जीती थी. फाइट या लड़के जीता जाता है. राशिद भाई वही जबरदस्त कवर किया. लड़के जीते Yeah. लेकिन फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मेंस टीम जीती हिस्ट्री की. तो न्यूजीलैंड भी मे बी वर्ल्ड कप जीत सकती है. maybe no. लेकिन मैं भी बोलूंगा ना अभी तो. लेकिन क्या इंग्लैंड को एक टीम हरा सकती है, वो है न्यूजीलैंड. Is it, do you think, that everyone wants New Zealand to win because they think Pakistan will have a better chance against them in the final? Yes, that's why. Is that it? I knew there was something. I knew there was something subtle about this. Okay, back to you. Yeah, because England won the last World Cup. Jinx broke because we were so confident in '92 because just reach to the final because England can't win World Cup. And that's why we want New Zealand into the final. History. And Aaqib bhai, still you are backing England. No, We're still backing. 46 years it took us to win a World Cup. So it's about time we won another one in a hurry. They won football World Cup 1966. Thank you. and England World Cup also 2000. But unfortunately, Germany aren't playing in this game, so we can't discuss them. You know why they won? Because they were playing against New Zealand. So one has to win. Okay, Carol. If there is any team, if England would have not won. तो अजहर भाई आप प्रेडिक्शंस पे आएंगे या आपसे हम स्टार्ट्स के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में बात करें? अबू धाबी पे. जैसे आपकी मर्जी, जो आप बोलेंगे मैं हाजिर हूँ. चलिए पहले आप भी प्रेडिक्शंस पे आए ना. प्रेडिक्शन तो मैंने आपको पहले कर दिया इंग्लैंड डेफिनेटली बिकॉज लॉजिक चाहिए ना. उनकी इंजरीज का इम्पैक्ट आपको लगता है कि नहीं No, होगा? I don't think so. There's any impact about the injuries. You know, like Mark Wood आगे थे उसकी जगह, मिल्स की जगह. 40 रन दिए ठीक है, उन्होंने. 40 रन हो गए तो बॉलर ही देगा ना, कोई और थोड़ी विकेट्स भी नहीं ली जो तो बॉल नहीं impact तो करेगा. हुआ. तो impact तो हुआ ना. अब टॉम करन नहीं खेल रहा तो वो तो 40 रन नहीं देगा ना, जो खेलेगा वही रन तो उसी की बात कर रहे हैं ना कि इम्पैक्ट तो हुआ ना टाइमर मिल्स के ना खेलने का. नहीं, वो 40 तो वो भी दे रहा था. टाइमर मिल नहीं तीन दे. आउट मैच में लिविंगस्टन ने बॉलिंग नहीं की है. ये देखिएगा अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ करवाएंगे. ऐसे ही है ना. बिल्कुल ऐसे ही है बस. Pace off is the key against New Zealand as well. So I think अगर आप overall team का comparison देखें तो England have more match winners in their side और impact players ज़्यादा हैं. न्यूजीलैंड no doubt कि वो बड़ी समझदारी के साथ क्रिकेट खेलते हैं. उनमें जो उनके जो प्लेयर्स हैं, जो गुप्तल है, अगर वो ऊपर से रन्स करते हैं तो देन दे हैव डेफिनेटली चांस. केन विलियमसन है, वो बड़ा स्टेडी खेलते हैं, बड़े गेम को लेके चलते हैं. मतलब वो उनके पास भी प्लेयर्स हैं. लेकिन अगर आप इम्पैक्ट की बात करें, जो मैं बात कर रहा था, बाउंड्री रेशो की बात कर रहा था, तो वो इंग्लैंड के पास वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है उनकी न्यूजीलैंड की. तो जाहिर सी बात है कि डिपेंड करता है कि अर्ली ऑन कैसा बॉल होता है, क्योंकि बॉल अबू धाबी में स्विंग होता है और वो टाइम ऐसा होता है कि पहले 3-4 ओवर स्विंग होता है. अगर सऊदी को देखें, अगर बोल्ड को देखें तो अर्ली ऑन अगर अर्ली विकेट बटलर जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं. अगर ऊपर से बटलर आउट होता है तो देन थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा. लेकिन ये टीम ऐसी है कि एक गेयर में खेलती है. इंग्लैंड को अगर आपने थ्रू आउट देखा हो, जब से 2015 के बाद से वो अपना उसी हिसाब की क्रिकेट खेलते हैं. अगर 2 भी आउट हो जाएं, 3 भी आउट हो जाएं, तो उन्होंने आके अपनी गेम खेलनी है. एक मैच के श्रीलंका वाला जो मैच था जिसमें बटलर ने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन वो पिच डिफरेंट थी. वो शारजा का पिच था, ये अबू धाबी का पिच है. यहाँ पे जो है ना, उसके बाद बॉल आना शुरू हो जाता है तो आपके शॉट लगते हैं. यहाँ पे ये ज़्यादा स्कोरिंग शॉट्स है इस टाइम पे, जब बॉल गीला हो जाए, पिच पे बॉल अच्छा आ रहा हो. तो आई थिंक इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड एक ही चीज़ पे फंसता है, पेस ऑफ या स्पिन पे. He's backing England all the way, especially in I Abu like him Dhabi. very much. Thank you very much, sir. He's a very good man. Especially in Abu Dhabi conditions. So would you like to talk about the results and Well, stats about Abu Dhabi? yeah, we can do. We can show you what's been going on in Abu Dhabi at this specific round at the Sheikh Zayed Stadium. And we've limited it specifically also to the evening games played there in the Super 12. So no qualifying games, no day games. We've only got 4 matches to talk about. The side batting first, strangely in some ways, because it sort of goes against the trend elsewhere, has won 3 of those games. Obviously the side batting second. Just the one. The toss
pretty even, so you don't necessarily win the toss and win the match, it seems. But most of the time, 3-1, people have won the toss and decided to chase. But again, Aaqib, this is kind of history again, and it involves lots of different sides, not necessarily England, New Zealand. And so it's really what sort of pitch, we don't know. I mean, I'm suspecting it certainly should be a very good pitch. They've had time to work on it for a couple of days, to prepare it nicely. We've seen before there's a bit of pace, a bit of bounce there potentially. Who would that suit most, do you think? I think the dew is the only factor. It will come into the affecting the game. Yeah. Otherwise, no one will take a chance of bowling under dew. So I think the simple is that you chase down. Yeah. Both teams have the similar sort of bowling attack. Two spinners. England has 2.5. Livingston is also bowling. So I think it's best you can use your spinners when the pitch is dry. And bowling wise, they're similar. I think the batting, they have more firepower with England. Yeah. And I think if you compare both teams, England should win. Yeah, If they play a normal cricket game. Is there another benefit too, do you reckon, Viv, that if it's a fresh pitch and there's a bit of pace and carry, and they might, who knows, we'll see the pitch in about 3 hours' time. There might be grass on it, who knows. But if there's a bit of pace and carry, and the new ball bowlers of both teams have the ability maybe to sort of pick up those early wickets, which we've seen before in the tournament so far in the Super 12s, can be match changing. The only problem that I see for New Zealand really, if Rashid bowls with a reasonably dry ball, he would be a huge effect, because I don't quite think the New Zealanders play that sort of stuff that well. And I think that would make, we all know the two paces, the paces on both sides are quality. And as Javed would have said earlier, that the toss, I think, is going to play a huge part, especially if the dew's going to come in. And that, to me, is, I don't think it's going to be fair in some cases. If you do have a wet ball, bowling, regardless of whether you get 170 or how much you say, 160. Yeah. 160. I think it's going to be tough if there's any dew factor for either team. Yeah, so I think this toss is going to be very, very important. Yeah, we did talk about that a couple of weeks ago, as we could sort of see this trend building up to say, well, if the toss is important in a semi-final and or a final, how about rescheduling the game to take the dew factor out? But of course, these dates and times were set And a long time ago. No one listened to us, really. And I felt it was good advice. Sorry, what's that? I felt it was seriously good advice. Okay, because, one more point. yeah. If you compare New Zealand new ball bowlers and England, I think New Zealand bowlers are more effective with the new ball, with Saudi and Bolt, because Mark Wood doesn't like a new ball. Jordan is always with the middle and death. So Chris Wokes is the only one who loves bowling with a new ball. If there is something in the pitch, seam bowling and Saudi and Bolt is always. They are good. They are, I'll give you that. They are good. But if you're England and you see something in the pitch, you can still use Wood or Jordan when it's going through to possibly good effect. And we'll leave that. And it's also possible. And it's also possible with Jason Roy out, they might go for another seamer also. That can be a possibility for them. Possible. If I were them, I'd still just push More batting. Bairstow up the order to open. Yeah. And put another man like sort of Billings in the middle. But again, we'll probably come to that later. Right, we've got some more stats. और ये इवनिंग गेम्स के स्टैट्स हैं अबू धाबी में हाईएस्ट टोटल अब तक जो इंडिया ने बनाया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट 210 उस पर इंडिया जीत गया था. हाईएस्ट टोटल चेज जो हुआ वो वेस्ट इंडीज श्रीलंका के मैच में हुआ 169 चेज हुआ. पावर प्ले स्कोर्स अगर आप देखें तो हाईएस्ट 53 है विदाउट अ विकेट. मोस्ट रन मिडिल ओवर्स में भी अच्छे रन्स बने और आखिर के ओवर्स में भी. तो ओवरऑल बैटिंग यहाँ पे अच्छी रही है अबू धाबी में जो हमने स्टार्ट से भी देखा है. और राशिद भाई अगर हम इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच की ये बात करते हैं ऑब्वियसली टॉस
बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. मैचअप्स का कितना बड़ा रोल होगा? ये दोनों टीम्स ऐसी हैं मैचअप पे खेलते जी, दोनों मैचअप पे खेलते. लेकिन थोड़ा सा नॉकआउट में चेंज हो जाता है. ठीक है, बॉल बैट हो जाए, लेकिन आप पहले बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर टोटल कर देते हैं. प्रेशर चेज करने पे होता है अगर नॉकआउट से हैं. बहुत दफ़ा हुआ है सेमीफाइनल फाइनल चेंज, लोग गलतियां करते हैं, चेज करने चले जाते हैं और वहाँ पे आप हार जाते हैं. तो क्या पहला क्या प्रेशर बिल्ड करेंगे, अच्छा टोटल. दोनों टीम ऐसी हैं कि जो अच्छा टोटल कर सकती हैं. इंग्लैंड को ज़्यादा एडवांटेज है कि पहली इनिंग में फ्री हैंड खेलते हैं ये लोग. न्यूजीलैंड नॉर्मल अपनी क्रिकेट खेलता है, लेकिन टॉस इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन नॉकआउट में थोड़ा सा एज उसको हासिल होगा जो पहले बैटिंग करेगा. ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशन आप समझ रहे हैं कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करना शायद चाहिए. हो सकता है. एक इशू, एक डिसएडवांटेज इंग्लैंड को जरूर है कि वो अभी तक अबू धाबी में इवनिंग गेम नहीं खेले. देखिए वहाँ पे स्विंग होती है, बात हो रही है. इंग्लिश की जो बॉलर है, जो बात हो रही है, ये सीम बॉलर है, लाके मारते हैं. ये बॉलर हैं, ये बता सकते हैं सही. न्यूजीलैंडर स्विंग के बॉलर हैं, थोड़ा बॉल आगे पिच करते हैं. बॉल देर तक जब रास्ते में होती है तो स्विंग होना शुरू हो जाती है. ये मारते हैं लाके, जॉर्डन हो जाए, वॉक्स हो जाए, वुड हो जाए, या तीसरा और कोई भी हो जाए, लाके बॉल को मारते हैं, जिसकी वजह से स्विंग कम होगी. सीम यहाँ पे होने वाली नहीं है. तो इसलिए एडवांटेज न्यूजीलैंडर को है कि सारे बॉल को थोड़ा सा आगे पिच करते हैं, स्विंग होती है. वहाँ पे आउट होने के चांसेस हैं. और अबू धाबी ऐसा है कि क्रॉस विंड होती है, ब्रीज है, खुला हुआ ग्राउंड है, जिसकी वजह से स्विंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जी उमर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी वो स्टेट दिखाया कि अबू धाबी में मैचेस ना जो हाईएस्ट स्कोर हुए या जो आपस में, लेकिन आप इसमें देखें ना कि जो हाई स्कोर हुए 200 हुए या 190 हुए या 170 समथिंग. आप ये देखिए कि कौन सी टीम आपस में, कौन सी टीम के लिए इंग्लैंड, इंडिया और अफगानिस्तान खेला है तो बहुत ज्यादा स्कोर बना. बिल्कुल. तो यहाँ पे आप देखें ना, आज के जो मैं बात कर रहा था ना कि आपकी डॉट बॉल के परसेंटेज, आज अबू धाबी है, बाउंड्रीज बड़ी होगी, यहाँ पे बॉल ट्रैवल करता है ज़्यादा, बजाय शारजा के वहाँ पे बॉल इतना ट्रैवल नहीं कर रहा था. मेनली जो बैट्समैन रिलाई कर रहे थे हाई शॉट पे, बिग हिट्स पे रिलाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अबू धाबी में बॉल अच्छा ट्रैवल करता है. बिग बाउंड्रीज है, शारजा और अबू धाबी की तरह छोटी बाउंड्रीज नहीं है. तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वही, अगर आपके जो डॉट बॉल रेशो जितना कम होगा वो टीम कामयाब होगी. वो टीम कामयाब होगी. अजहर भाई, वही सवाल जो मैंने राशिद भाई से पूछा, इंग्लैंड ने अभी तक इवनिंग मैच अबू धाबी में नहीं खेला. इस तरह के मौके पे जहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी सी इंजरीज भी नज़र आती हैं, टॉस इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, बहुत अच्छी टीम से उनका मुकाबला है, ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज इंग्लैंड को होगा. देखें, जो राशिद भाई ने बात की ना, उस पर मैं कहूँगा कि आप जब भी नॉकआउट स्टेजेस पे आते हैं, ब्रॉन्ज ऑन द बोर्ड जो है ना, चेसिंग साइड को ऑलवेज प्रेशर होता है कि अगर आप बड़ा टोटल डाल देते हैं तो फिर चेसिंग साइड में मुश्किल होता है. लेकिन उसमें दो चीज़ें देखनी है. एक तो ड्यू फैक्टर को देखना है कि ड्यू कितना उसमें उसका रोल है. और हमने जैसे यहाँ पे देखा है कि ड्यू काफ़ी इस वक्त इस टाइम ऑफ द ईयर में ड्यू काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है. तो अगर बॉल वेट होता है तो ऊपर से तो हो सकता है कि पहले 4 और 6 ओवर में बॉल स्विंग हो, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है ना आसान हो जाए. और जो बैट्समैन यहाँ पे खड़ा होता है फिर वो लंबे रन्स कर सकता है, और इनके बैट्समैनों के पास ये एबिलिटी है. आई थिंक कि जो मुझे लगता है कि आदिल रशीद जो है वो उसके साथ नया बॉल करेंगे आज. आदिल रशीद नया बॉल करेंगे. सो दैट्स द प्रेडिक्शन दैट आदिल रशीद माइट यूज द न्यू बॉल फॉर इंग्लैंड टुडे. Okay, I like it. I like it. Could work, who knows? But we'll find out, of course, in due course. Right, one final thing in this segment. Just have a look at the way these two teams made their way through that Super 12 to the semi-final. Whether or not this has any relevance will be seen later. First of all, England, who had to beat, or succeeded in beating West Indies, Bangladesh, Australia, Sri Lanka, but lost to South Africa. And New Zealand lost their opening game to Pakistan, then beat India, Scotland, Namibia and Afghanistan. I suppose if you weighted that in a sense on the quality of the opposition, you might just say, Viv, that England had slightly the tougher journey. And it's going to get tougher as well. we are in semi-finals. There is so much. One-liners. There is so much psychology going on here, and that psychology starts with B. But anyway, go on. I think, definitely before the game you can only see what happened, what is their journey and all this stuff. And England looks better side. I don't know what happened today. They might things come out differently, but at the moment, England, they're bowling, they're batting, and their positive approach, the way they approach to this game,
I think they worked hard. They took a decision after long, and they achieved. And they shone in 2019, and now they are ready to go now. Well equipped, good history, success is always there whenever they play any team recently. Indeed. All right. Let us leave it there for now. A lot of things still to be said, a lot of things still to be looked at. We need to take a break. We'll be right back with you. Game on High.